onwards, and it can treat the wastewater and make it suitable for landscaping and also storage of firefighting. This particular technology has won the NASA Reliance Industries Platinum Jubilee Award in 2020. Dairy wastewater conversion, where we are treating it to generate, the nutrient is used for generating algal biomass, which has higher content of lipid as well as carbohydrate, so can be the starting material for biofuel, and the total water is reusable for That algal biomass is used for feed, chicken feed or anything like that? So we have not tried out, we just tried to check that within 48 hours, unlike what is reported, it can clean up the nutrient. So just 48 hours. So the total process of 20 hours of bacterial followed by algal, it takes 68 hours as compared to 105 hours which is required conventionally. So for aquaculture, this is the latest one that we have been able to do, where we treat the wastewater and we can reuse it again for aquaculture. Here an example of an aquarium-based treatment where the bacterial biofilms are put on ration ring and they are made to float on this aquarium. This particular aquarium of 200 liters plus, it's already in the 9th month of operation. Normally every 10 days one has to change the water. 9 months, no requirement of any change. So if you use this process in a shrimp farm, which is of very, very high value, see, one of the major problems of shrimp farm is they have viral infection, and that causes a huge problem. Basically, these are bacteria which are removing the nitrite and the ammonia, and so we do not have any algal growth. That's what triggers the algal growth. So that is how the water is kept clean for on a long run. Ammonia, nitrite, some part of phosphate. Does this help in what we are trying to do is to identify the virus, and then if they identify the virus, they loss further. So we have not tested whether if it removes these pollutants, kind of a facility like that. If it does, it has a very huge. Here what we have is the dairy wastewater conversion into liquid biofertilizer process, and where we had installed this reactor of 9,000 litre per day persistent capacity at Gomti in 2018, April. It's still running, functioning fine. The total biofertilizer can be used for agriculture, where it replaces the use of chemical fertilizer and fresh water. Unlike conventional organic food or biofertilizer, this enhances yield compared to chemical fertilizer. So this particular process, it consumes almost 75% less space, 90% less energy as compared to a conventional ETP. You already know about this, and even the climate launch pad. So this has also been used to grow Remi fiber organically, and we have developed a process for treating the Remi fiber degumming using microbial enzyme. Here finally, starting from the raw fiber of this kind, through the thread, now we have all these products that we have generated. Using different facilities, be it with hand, you can touch and feel itself. This is soft. So a coarse fiber as coarse as this can... So how did Women's Club get into... Okay, they are the only people, Jayashree Textile, who prepare linen clothes. And since this is a long fiber like the flax fiber which is used for linen preparation, so I wanted an industry feedback. So I prepared these threads, got them made, and then I sent it to them to know if it was at all of a quality good enough for industrial purpose. So this is the cloth that they made. This with just calendering gave us this. And when this calendering was coupled with bleaching, this is what we had. So what we are trying to do is getting in touch so that we can transfer the technology to the relevant people. What about the company? Waste to wealth.
hire someone, but currently we are already having 2 people who we have hired for the day-to-day work. So unless there is some fund to sustain it in form of a project or so, it's becoming a little troublesome to carry it forward. That is why also we have done an MBA with KIT TTO, Technology Transfer Office, so that this commercialization can be done. Obviously that's a very high price that they will be charging. They said 40% and initially... What is the cost of the project? Which one? This project? This one, we had got about 46 lakhs from Biotech and then a follow-up project of 8 lakhs from MSL. That has led to this, not only the dairy part, testing it for 17 different crops and also getting the NBA approval and also a third-party validation of it. And finally, this product development where we are trying to associate with others to ensure the facility we don't have, like for making the thread or the yarn. So we are using the facility and trying to get to a complete solution from growing Remy till the product formation. If the process is fixed, then the industry will take it. So what are the materials you are using for as a feed for feeding this industry? Waste. Waste. Like see, the sewage water, fresh water crisis is a global problem, right? And unfortunately for agriculture and aquaculture, we use up most of the fresh water that we draw. Dairy and piggery water. It's all, I mean, different kinds. So what we are trying to develop is microbial solution whereby the waste water can be treated and can be used for non-potable application, so that the fresh water can be left for drinking purpose. That's what Waste to Wealth is working for all these years, and the different technologies that have been developed with the objective that they should be faster than the existing system, they should be sludge free, so that the waste treatment itself becomes much easier and affordable. And of course, there is complete reuse of the treated But the product. cost is very high too. No, that's where we differ. Yeah. Because these have minimum maintenance to be done. Once set up, it can run for a longer time. So the overall operational cost, OPEX, will be very low. Actually, in many cases, the CAPEX is also lower than the existing system, which are there in the market. But it's a question of reaching out to the market where we are yet lagging behind. The first time you have tried in Tripura University. This one? I started it when I was working at West Bengal University of Technology in West Bengal. Achha. But the scaling up was, of course, we could do only after we got this Biotech funding and tried it out at Omfe Dairy in Bhubaneswar and at Bonti Dairy at Agartala. Thanks to Biotech. But these are all funded with MHRD funding, the petrochemical. We had got the frontier area, under frontier area. Ministry of Agriculture is not funding for this type of... ICR, the initial one was by the Indian Council of Agricultural Research. There is also funding from BRNS because we have some tannery waste treatment process with BAE fund. And this one, the other three that you see, aquaculture, petrochemical, this is directly from Ministry of, MOE as it is called now, but it was MHRD earlier. They had given a frontier area, under frontier area of science and technology, they had given a center of excellence. So this was under that. Very good. This is the name of the Period of time. Because ultimately, tea garden is something which will be there for years altogether. So here the crops that we tried out like mung bean, black gram, maize, remy, sorbet sudan grass, scented rice, aloe vera, lemongrass, potato, yam, colocasia, sweet potato, these are something which can be put in immediately and will check the yield. So that is why I have use the cow urine. They use it urine. See, urine, whether human or cow, will have phosphorus. Available that is against one variant that comes from China. Now what we are working is new variants, that is Delta and Omicron. The combination of Delta and Omicron that will cover even the Wuhan variant. So that will be effective against Wuhan variants also, Delta variant and Omicron and other variants also. Which vaccine is most effective against all the available vaccines? All vaccines are almost similar. Achha. There is no, you cannot say about most effective. That depends on the human body system also. We are more There are many factors. healthy. Yeah, so it will be more effective. Yeah. So all vaccines are almost similar. There will be some adverse effect difference will be there. So ours is RBD based, protein based vaccine. So that is very good. Immunogenic response are very good. We have done the animal trials in Israel, Europe, and
On which animal you have done the trials? We have done on mice and rabbits. Achha, mice. We have done the challenge study also. So it has shown that it is having better immunogenic response. And our collaborators are from US, Israel. They are doing clinical trial also. They have started. We are also starting in India with the help of Biotech, with the support of Biotech. We are doing the phase 1 and phase 2 in India. So hope to get the vaccine within 6 months, 6 months or 7 months. That will cover most of the variants. So we have almost all the variants now available: alpha, alpha, beta, gamma, delta, and the trivalent, which will have alpha, beta, and gamma all together. Yeah. So we have all the variants close. But right now, currently, we are working on the Omicron and Delta, which will cover most of the variants. And next future, our technology unique feature is we have some 7 platform, which like suppose new variants are coming, new variants. So other companies will take almost 3 to 6 months to develop the vaccine. But we have the system, we can integrate the protein very quickly and we can get it done in 7 weeks. We can develop the new vaccine in 7 weeks. Within 7 days? Within 7 weeks. 7 weeks. Because 7 days it is not possible. 7 days, within 7 weeks. 7 weeks. Because there are so many optimization in the system itself to get the vaccines. Yeah. So our system is very easier. So you are from which organization? I am from Epigen Biotech. Achha. I am working at Epigen Biotech. Yeah. And we have developed, now we are making the protein, we are going for the clinical trial, phase 1 and phase 2. So hope to May I have a card? industrial enzymes, which is very high expression, almost 20 gram per liter protein. So now the same platform we are trying for the vaccines, which almost we are getting 2 gram per liter, which is almost 20 to 30 fold what other people will be getting. So that way we will bring down the cost of vaccine. That will be economic. So that is our target. Cost should be. This is a writable erasable paint. Yeah. It can turn any surface, be it walls, be it table, any glass, any steel, and that kind of thing. It can make it writable and erasable. For example, we have painted this cardboard Yeah. with this. You can write it with any markers, pencil, chalk, and it can be easily Erased. So what is the cost of this paint? 300 rupees for 500 ml. 4-5. What is the cost per unit? For 1 liter it will be 600 rupees. 600. And it will also come down when we scale up the production. This is contact killing solution. It is a surface disinfectant. Yeah. It doesn't have any alcohol. It doesn't have any metals. Once sprayed, it will stay there for 60 days. 60 days. 60 days. It doesn't evaporate. It creates a thin film on any surface. For example, you use it on doorknobs because it is a frequent. A computer and there are other things which we cannot sterilize. It also is odor eliminator. You use it once or twice and the bad smell will go completely away. For example, when you go to washroom, after urinating, you just need to spray it once and you don't need to flush water. Water will be removed and this is back. This is the microbial and the waste of water to create this batch. Because of moisture that helps heal the wound. Now technically it is from the conventional wound patches usually there is no moisture in it. Moisture is very much required for healing any difficult wounds because it needs a transport medium for the wound healing tools to move around and rebuild the damaged tissue.
but usually people just leave it dry. So that the idea is that we leave it dry to yield it. That is not the case actually. So this has a 98% moisture and keeps healing process faster healing. Main thing is about the moisture. Moisture as well as the compound element which we are using is monolaurin. Monolaurin helps in the, so it has an increased wound healing property. These are wound healing, cell regrowth properties, antimicrobial, all these properties are there. Like from the Non-alcoholic hand sanitizer. It protects you against virus, bacteria, and also moisture. not a spray. It's not a spray. It's not no alcohol. You can just use this as Purely plant or potato plant-based. no other plant. बताएंगे सर अपने प्रोडक्ट के बारे में? So, hello, I'm Vivekanand from Order Biomed India Private Limited. We are based out of Coimbatore. So we are a 100% natural coconut-based wound healing product, which is the one that we are developing. The product is made from wasted coconut water, and we are also isolated a compound called monolaurin, which is extracted from the virgin coconut oil. So monolaurin is found to be antiviral, antibacterial, and antifungal, and we have proved that monolaurin works against COVID. So we have this wound patch is used for healing diabetic wounds, burns, hard to heal ulcers, so those kind of situations. And we also come out with non-alcoholic hand sanitizers, which also acts as a moisturizer. So these products are 100% natural, with no chemicals in it. It is very good for the body and the skin. It doesn't have any side effects. थैंक यू. This is a hand sanitizer with zero alcohol, no alcohol, just water and no, this is plain water and then monolaurin, that is completely extracted. So it actually moisturizes the skin and also protects against any virus. Nothing. In fact, you will feel smoother skin if they have been applied. And we have हेलो सर. What is concerned, but before we export this, we will compliance requirement in the importing part. So I can help you on that. And whenever you export, you get certain benefits. Correct. I have compliance. Sure. Where do you decide this? Okay. I'm in very okay. What about you? It works. So when a patient gets sinusitis, like pain over here, cold, they get the pain, right? Now those are the symptoms of sinusitis. We prepared a nasal spray, which can treat the root cause of sinusitis, the infection part. That's first of kind in the market. It contains antibiotic or something? Yes. It reduces the antibiotic resistance as well for several species, targeted drug delivery and reduced dose and decreased side effects. That is core point for us. What is the cost of this spray? Cost around 215 rupees, 215. 200. It's available in Delhi and one entry or Not yet available. no. Ballpark figure, what price will you accept? The clinical price. ये स्पेशल पेटेंटेड सिलिकॉन जेल्स हैं जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, एंटी फ्रिक्शन प्रोडक्ट्स हैं. तो ये जो भी आपको घर्षण होता है ना घिसने से, वो प्रिवेंट करते हैं टोटली. और सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रोडक्ट है जो बेड सोर्स प्रिवेंट करता है. बहुत ही यूनिक है, ऐसा प्रोडक्ट है नहीं दूसरा. अच्छा. और ये हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के द्वारा और आगे ले जाएंगे. क्या प्राइस है इसका अप्रॉक्सीमेट?
ये जो है सब मोस्टली 390 रुपीज़ है 20 ग्राम के लिए, लेकिन 20 ग्राम आपको 1 महीने तक चलता है। ये सोरीज 30 ग्राम है जो 871 रुपीज़ का है, लेकिन लोग नॉर्मली एक के बाद 2, 3, 5 लेते हैं क्योंकि ये रेगुलर यूज़ होता है बेड रिडन पेशेंट के लिए, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स होते हैं। अच्छा अच्छा। और ये भी क्या होता है कि ये सोरीज भी अगर आप बेड रिडन पेशेंट को लगाओ तो भी वो बेड सोर तो हाँ, लेकिन वो तो बहुत थोड़ा अमाउंट यूज़ करना पड़ता है, स्प्रेड अच्छी तरह से होता है। अच्छा। एकदम थिन माइक्रो लेवल का एक लेयर, थिन फिल्म करना पड़ता होगा। थिन फिल्म होता है बैरियर, तो इसीलिए इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज एक ट्यूब आपको 3 वीक तक तो चल जाती है। और आपको बेड सोर प्रिवेंट हो गया तो उससे हाँ, सवाल उसका है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, स्पेशली ओल्ड पीपल है, बेड रिडन पीपल है, जो बेड में आ जाते हैं जो पेशेंट, उनके लिए बहुत व्हीलचेयर ग्रस्त भी जो लोग होते हैं उनको भी एक जगह पे बैठते हैं ना बहुत घंटे, स्किन बहुत प्रेशर और फ्रिक्शन से खराब हो जाती है। तो जो भी फ्रिक्शन की बीमारियां हैं उसके अगेंस्ट प्रिवेंटिव है। और ये जो डायपर रैश प्रोडक्ट है ये प्रिवेंटिव भी है और ट्रीटमेंट भी है, क्योंकि इसमें हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, लैवेंडर, पचोली, कैलेंडुला, तो इससे रैश हुए हैं तो भी अच्छे हो जाएंगे। और ये बेबी को दिन में 2 बार लगाएंगे तो कभी रैश होगा ही नहीं। 2 बार लगाना पड़ेगा दिन में? हाँ, 8-10 घंटा चलता है एक एप्लीकेशन, फिर घिस जाता है, या फिर आप स्नान कराओगे, क्लीन करोगे तो निकल जाएगा। ठीक है। ये हमारा एंटीवायरल के लिए प्रोडक्ट है। अच्छा। मल्टीपल वायरस पर वर्क करता है। अच्छा। और नॉट फॉर ओनली सिंगल वायरस। दिस कवर डेंगू, स्वाइन फ्लू, जापानीज हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया एंड कोविड आल्सो। क्या कॉस्ट है इसकी? 250 रुपीज़। 250। ये प्रिवेंशन के लिए भी है, फिर बचाव भी आप इसमें सकते हैं। अगर आप वीक पर ट्वाइस लेते हैं तो आप इससे बचे रहेंगे। अगर हो जाता है तो फिर दिन में आपको 3 बार 5 डेज यूज़ करना। 5 डेज यूज़ करना बस। या कैटलॉग में हमारे पास लगभग 20 प्रोडक्ट्स आइल्स के हैं और 5 प्रोडक्ट हमारे FCCI के हैं और 1 प्रोडक्ट हम UK एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप कहाँ से हैं? गुजरात से। अच्छा, गुजरात से। आपका नाम? कृष्णा गोयानी। अच्छा, तो आप क्या लेके आए प्रोडक्ट? ये हमारा टीबी कलेक्शन एंड डिटेक्शन किट है। थोड़ा जोर से बोलेंगे तो अच्छा। हाँ, आवाज़ बहुत ज़्यादा। टीबी कलेक्शन, टीबी सैंपल को कलेक्शन करने के लिए और उसको डिटेक्ट करने के लिए ये हमारा प्रोडक्ट है। ये अच्छा। हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है, टीबी साइन कार्ड इसको हम बोलते हैं। इसमें हम स्पुटम को कलेक्ट करते हैं। स्पुटम को कलेक्ट करने के बाद उसको एयर ड्राई करते हैं। एयर ड्राई होने से वो अपने आप कलर चेंज कर देगा और इसलिए हमें पता चलेगा कि हमारा सैंपल कहाँ पे है। जहाँ पे हमारा सैंपल है वहाँ से हम पंच लेते हैं। पंच लेने के बाद हमारे पास एक वन स्टेप एक्सट्रैक्शन बफर है, उसके साथ मिक्स करते हैं। बफर के साथ मिक्स करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे 20 मिनट इंक्यूबेट करना रहता है। इंक्यूबेशन के बाद हम पूरा लिक्विड को ले लेते हैं। उसमें एक हमारे पास प्री कोटेड ट्यूब रहता है। ये हमारा एक कैसेट है, उसमें एक प्री कोटेड ट्यूब है। इसमें सैंपल को डाल देना, उसको प्रॉपर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको 65 डिग्री पे हीटिंग ब्लॉक पे रखना है, हीटिंग पे 30 मिनट के लिए उसको इंक्यूबेट करने के बाद वापस से रिलिक्विड कर देना है। उसके बाद इसको क्लोज करके हमारे इस सिस्टम में ऑलरेडी नीचे कटर हमने रखा हुआ है, तो कट यहाँ प्रेस करने से कट जाएगा। वो कटने से बाद सैंपल और बफर मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के विदिन 2 to 5 मिनट्स में वो हमें बैंड के रूप में रिजल्ट दिखाएगा। अगर 2 बैंड दिखता है तो वो सैंपल टीबी के लिए पॉजिटिव है, और सिंगल बैंड दिखता है तो कितना टाइम लगता है टोटल प्रोसेस में? 30 to 40 मिनट्स। 30 to 40 मिनट्स। और एक ठीक, क्या किट की क्या कॉस्ट है इसकी? जो स्टिक बेस किट है उसका 400-500 पर सैंपल है। और जो एक नेकेड आई भी है हमारे पास, जो आप देख के बता सकते हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये मोस्टली हमने रूरल इंडिया को ध्यान में रखते हुए किट बनाया है, तो इसमें हम कोई हाई-फाई इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं। नेकेड आई में वो पर्पल कलर से ब्लू कलर, अगर पॉजिटिव सैंपल आएगा तो ब्लू कलर में ठीक है, थैंक यू। क्या टेक्नोलॉजी है मैडम आपकी? सर ये एक डिवाइस है जो इस तरह से शू में चला जाता है। अच्छा। और मूवमेंट एनालाइज करता है और इससे आपको आपके फूड की कंडीशन के बारे में बहुत सारा डायग्नोसिस मिल सकता है और इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपनी ओवरऑल मूवमेंट को। आपको नी पेन है, ही पेन है, सब कुछ डिटेक्ट हो सकता है और उसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन मिल सकती है कि आपको क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। आपको कस्टमाइज्ड इंसुलिन
पहनना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये तो कितनी देर में मिलता है? जैसे मान लो हमने आज 10 मिनट। 10 मिनट में, तो आप उसको एनालाइज कैसे करते हैं? एक ऐप से कनेक्टेड है, लैपटॉप पे भी और मोबाइल पे भी। तो वो जो भी आपके यहाँ अवेलेबल है सिस्टम, आप उससे एनालाइज कीजिए। क्या कॉस्ट है इसकी? 25,000 आएगा। 25,000। We are the Vanguard Diagnostics company. We are dealing with the reagents for the 3-part and the 5-part analyzers and the instruments. We, the company, are working on the development of the various diseases for the rapid card test, malaria, dengue, chikungunya, the basic products. We are the company who is working on the Atmanirbhar Bharat, and the objective is because most of the reagents is being imported from the various countries, from China and Europe. So we do manufacture the various model reagent for the various model of the 3-part analyzers, and also develop the reagent for the 5-part analyzers. So this is the basic product which we manufacture here, and gradually once the business increases, we are manufacturing the ELISA-based test for the HIV, hepatitis B, and non-tuberculosis product, and gradually move for the manufacturing and the development of the COVID-related product for the COVID antigen antibody and the coagulation. So we have the various range of the product, including the coagulation instruments, coagulation reagents, and the controls. Recently we developed this product. This is basically a COVID antibody neutralization assay, which can significantly tell about that what is the antibody level of the neutralizing antibody in the patients, so that it can be care about how the patient has the sufficient antibody which can be taken care of as the virus. So we have the various product lines which we deal with. We are gradually moving in the molecular diagnostics, where we are manufacturing test for the RT-PCR, RT-LAMP for the typhoid. We had tied up with some university for the typhoid rapid card test. So this is how we are growing up. We started this company in 2015 with the 1.5 crore turnover, and the last year we have been achieved with the 25 crore turnover. So the product has been increased from the 15 product to the 135 product recently, and we have the more manpower. We started with the 15 manpower, now we have the more than 50 manpower. So distribution network, we have 10 to 15 distributors in 2015, and gradually nowadays we have the 300 distributors. So in the different segments we are working in the different parameters. So this is how the company is progressing. Okay, thank you. We are extremely thankful to the government of India. They have funded us. They have been very supportive for the last 5 years. They supported us. We worked on the supporters. It is a proud moment for India that some Indian company has really produced this. And where this R&D happened? We got our setup at Gurgaon. There we do our R&D. We got a team. This kind of things, I think AIMS, they are also developing. Yeah. So AIMS. I went to AIMS. They are very keen to have a Make in India. They said we want to support you. We got into railway now. What is the name of this machine? Sir, this is called. This is a machine which is called surgical endovision system. So all minimal invasive surgeries are being performed with this machine. And this is the first Indian company. Unilab, our company. We are the first company which is indigenously developed this. With the help of the government of India. The great vision of our Prime Minister, Mr. Modi. Under the vision of this present government, they really supported us. They funded this project. We have worked for the last 5 years. After 5 years, we have been able to develop this machine. What is the cost of this machine? Well, it varies. There are different variants. As far as our machine is concerned, we are almost 50% the price of the global. So we need to justify the Make in India. It should reach to all operation theatre. I just want to give one data on that. If you go to the western part of the world, for every 1 lakh population, there are the 23 operation theatres. Unfortunately, here, for every 1 lakh population, there is only 1.3. This gap of 22 operation theatre in order to give medical services, probably this machine fits into that. This is
what we have developed. Our team is of coming from NITs and IITs. Our founders are basically the doctors and the technocrats. We all have worked together to develop this machine. We already got 2 patents and we have got 11 patents in the pipeline. So we have the projects going with the Indian Institute of Science, IIT Roorkee, working on a lot of things. So this is under, we got a vision under the PM's, the kind of the way he's look at the broader picture, and we got motivated. We all got together. We said, let us work, and let this dream of Make in India, Atmanirbhar Bharat. That's what we are working for, and this is the beginning as far as the medical device is concerned. It is a top-end medical device. If you look into the CT scan and all, after that, this machine comes. So you have done already some installation, or this is? Yeah, we have done few installation, but we have done almost 115 surgeries so far. In the very eminent hospitals and the institution, and they have rated us as good as the players who are there for last 20-30 years. They said, the technical part is no way less than those players who are there for quite some time. We have done very well. What are the biggest challenge, right? That is cardiovascular deaths. Overall, 17.9 million people die because of cardiovascular deaths every year. Yeah. Within India, we have 1.3 billion population and there are only 5,500 cardiologists. Not everyone in India gets a right cardiac care. And this is very critical for us to solve this problem, right? To ensure that the deaths are very less. We are planning to shift 80% of deaths that are happening to 80% of lives that can be saved. So we will build a cloud solution. It is artificial or made from the animal, this one? So it is AI plus medical expertise that we use to provide ECG reports. Okay, we capture ECG reports from any device, we upload it to cloud. There is an AI engine that works. Right, we have done 9 million ECG screenings so far, which can diagnose up to 200 cardiac cases. Now all the reports will be verified by the end doctor and give it to clinic within 10 minutes span of time, which is never happening today in India. So that is what we are proud of, and we are. What is the cost of this valve? So this is a machine that we launched. This is a portable ECG machine that you can carry out to any place. This costs 35,000 plus taxes. Where interpretation charges anywhere varies between 65 to 75 rupees per ECG. So, and we are also offering cloud echo and other solutions as well. So that we have launched echo service this year, and we are going to launch Holter by the end of the year, and also many other upcoming solutions. Thank you. हमारा जो प्रोडक्ट है कीबो एक्सेस, ये एक स्कैनिंग एंड रीडिंग डिवाइस है जो कि कोई भी प्रिंटेड या हैंड रिटन टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करता है, ताकि ब्लाइंड और प्रिंट विकलांग जो लोग होते हैं वो भी किसी भी पेपर पे लिखी हुई चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मैंने इधर कोई भी मेरा डॉक्यूमेंट रख दिया, ठीक है, उसके बाद मैं इसको मतलब पिक्चर 1 सेव, ठीक है, फिर मैं इसको प्रोसेस करता हूँ। मैंने इस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस किया अभी, और इसको मैं ऑडियो में सुन सकता हूँ। Guidelines for Persons with Disabilities Scheme in Universities 12 Plan 2012 to 2017 Component 3 Providing Special Equipment। हमने इसको ऑडियो में सुना। अब इसके साथ साथ अगर मैं रीजनल बैकग्राउंड से और इसको मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनना है, तो मैं इसको combo box, select language, translate, navigate, alert you just translated English document। इंग्लिश को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, अभी डायरेक्टली इसको मैं विश्वविद्यालयों में विकलांग व्यक्ति योजना 12वीं योजना 2012-2017 ज्ञान विज्ञान विमुक्ति घटक 3 अलग अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए शैक्षिकी सेवाओं को बढ़ाने के लिए विशेष उपकरण प्रदान करना। अलग अलग व्यक्तियों को उनके दैनिक कामकाज के लिए विशेष सहायता और उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये इसको मैं स्टॉप करता हूँ। तो हमने इसको सुना, ट्रांसलेट करके भी सुना। तो लिसन, ट्रांसलेट, डिजिटाइज, मतलब इस सेम डॉक्यूमेंट को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ वर्ड कॉपी फाइल, ताकि लोग इसको डाउनलोड करके ब्रेल। क्या कॉस्ट है टोटल सेटअप का? इस हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर का लाइसेंस 49,350 में आता है, और हम इसको स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इंस्टॉल करते हैं, ताकि स्कैनर के लिए कॉस्ट कितना है?
यही बोला 49,350 ये स्कैनर और ये सॉफ्टवेयर जो हम देख रहे हैं ना दोनों एक साथ वो आता है। और हमने इसको जुलाई 2019 में लॉन्च किया था। उसके बाद इसका स्कैनर भी तो अलग से आता है, मैंने देखा था इसका केबो का स्कैनर। हाँ कीबो का स्कैनर है बिल्कुल, मतलब पर इस स्कैनर को चलाने के लिए का जो सॉफ्टवेयर है ना अकेले स्कैनर में वो ऑपरेट नहीं करता। स्कैनर में स्कैन कर देगा ना, उसके बाद तो बहुत दूसरे सॉफ्टवेयर भी है जो कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ पर ये यूनिक बात ये है कि ये प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट को भी सपोर्ट करता है। अच्छा ये यूनिक चीज़ है। हाँ हैंड रिटन टेक्स्ट को भी सपोर्ट करता है और 60 ग्लोबल लैंग्वेज तो करता है ये, साथ में 13 भारतीय भाषा सपोर्ट करता है, आसामी से लेके तमिल तेलुगु उर्दू तक। अच्छा हैंड रिटन को स्कैन करना है। हाँ जी, तो मैंने ये डॉक्यूमेंट इधर रखा। Alert Kibo XS preview has loaded. Alert picture 1 saved. Alert reader page has opened. हमने हैंड रिटन टेक्स्ट को स्कैन किया और इसको मैं प्ले करता हूँ। Friday, June 10, 2022, 14:14 and 37 seconds. Hello everyone. This is a sample handwritten note for the demonstration of Kibo XS device. Kibo XS device helps you listen, translate, and digitize any printed, handwritten ये text इसका in अच्छा real फीचर time audio है, signals. ये यूनिक फीचर है इसका हैंड बिल्कुल, रिटन। और इंडियन लैंग्वेजेस में करता है और आप इसको MP3 में डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा नहीं, इसको हिंदी में स्कैन करेगा कि नहीं करेगा पहले बताओ। हिंदी में करेगा ना, बिल्कुल हिंदी में। हिंदी का है कोई? हिंदी का ये डॉक्यूमेंट है। हाँ। हिंदी हैंड रिटन करेगा, हिंदी हैंड रिटन भी करेगा, मतलब जो भी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं वो बहुत प्रिंटेड आ जाएगा। क्योंकि हिंदी का मुश्किल से मिलता है ना, क्योंकि हम यूज करते हैं हिंदी गुजराती जो भी। Kibo XS preview has loaded. बाकी का तो मैं इंग्लिश का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही तो हमारी राष्ट्रभाषा का नहीं मिलता। Alert picture. Alert reader page has opened. अब हिंदी है। गोदान दो प्रेमचंद सेंद्री और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई जरूरत खराब डॉक्यूमेंट है पर फिर भी नहीं अच्छा इसका। राय साहब अमरपाल सिंह सेंद्री ने दोनों गांवों में स्कैन केवल भी अच्छा 5 किया है, मिनट का कंट्रास्ट भी अंतर अच्छा है। पिछले तो ये हिंदी है और बाकी की जो भी लैंग्वेजेस इंग्लिश उर्दू कन्नड़। आपका इसका लीफलेट दे दीजिए मुझे। हाँ जी। अच्छा कार्ड किसका? हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? हाँ ठीक है। Instead of pamphlet, you can. जोर से बोलिए, थोड़ा सा पता बोलते भी रहिए कोई नहीं। Just explain. This is a OCT, optical coherence tomography system. For image analysis, for analysis of biomedical products like biomedical samples. This is a non-invasive 3D imaging technology which allows researchers to look into the layers of the skin, layers of the paper, here layers of the skin, layers of the tooth, layers of the nail, layers of the retina, and all these layers can be easily visualized. How do we use this visualization? It is used to diagnose glaucoma at a very early stage. Matlab, we can way before the glaucoma symptoms start to occur, like loss of peripheral vision, loss of increase of pressure. Even before the symptoms occur, we can actually see we can diagnose. How is device is used in body? So this is the scanner head, and as you keep our organ, you can see the layers of skin. Layers of skin or layers of whatever tissue is there. So you can imagine that those things can be. So whenever there is a cancer inside the skin, what is the percentage of accuracy? Currently, this is being used in a preclinical version. In a preclinical version, the diagnosis is accurate as 99.2%. The algorithms that are working on detecting a cancer or a tumor, that comes to more than 99%. Distinguishing between cancer to tumor
there the accuracy reduces to 0.8%. So as we see, go deeper, and we can see the images. That's the surface of the skin, and we can also see few more layers down there. So that's the device. This is the animal scan, and this is the chin rest assembly. Here, this device goes and stands here, and then we have to scan the eye to do the early diagnosis of glaucoma and AMD, diabetic retinopathy, and also we can do the corneal imaging as well. We can also do the lens imaging and angular imaging as well. All these images are put together through various algorithms like RNFL analysis, GCA analysis, and all these algorithms give us information to diagnose glaucoma, to diagnose AMD, and to diagnose any other retinal detachment diseases, also keratitis, corneal diseases as well. That's we call it eye scanner. We have the trademark, and we are from Medef Plus, Tisha's medical device. We are, got selected for all exhibition as well as pitching, as well as for the product launch. One of the very few. Thank you. Thank you. Here we have the world's smallest U-visible spectrophotometer, which also incorporates fluorescence in this. So, as you can see, we have three modes: fluorescence, absorption, fluorescence, and reflectance. For example, if we go to fluorescence, we have two modules, 365 nanometer and 470 nanometer. And in the absorbance, we have 4600, the UV range, which is 260 nanometer, 280 nanometer, and 340 nanometer single wavelength, and the entire visible wavelength from 400 to 700. I'll just take a reading and show you. First, we have to take the blank. I have DI water over here. We put the cuvette in, the cap. We have to long press it for the blank. It shows blanking, and the reference will be set shortly. It's set. Now we just have to put. I have Rhodamin B sample with me here. I'll put this inside, and a single click will provide us with the absorption spectra of Rhodamin B. In here, we can rotate the knob to go to the desired wavelength peak. As soon as you turn the device on, it gets connected with your app over Android, over Bluetooth. You can also, if you don't wish to touch the knob at all, you don't have to. You can directly see the X and Y values over here. You can save this data over Excel, CSV format or Excel sheet, and you can WhatsApp it to someone, mail it to someone, you can upload it on the cloud as you wish. It also has fluorescence. So for the fluorescence, I showed you two excitation modules. I'll show you for now for 365 nanometer excitation. We have the fluorescence spectra. Here we can go over to the peak and note down the wavelength number and the absorbance. इसमें इंफॉर्मेशन इसी डेटा से एक्सट्रैक्ट मेजरली आपका हमारा R&D फेज में ठीक है, अभी R&D फेज में हमने ये पता किया है इस एनालिसिस से वो हमने नहीं किया, इसीलिए मैं इसको अभी क्लेम नहीं बट मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ऐसा भी थोड़ा आएगा
अच्छा, हमारा प्रोडक्ट है एक मेंस्ट्रुअल पेन रिलीफ डिवाइस, पोर्टेबल यानी रिचार्जेबल डिवाइस जो मेंस्ट्रुअल पेन में यूज़ हो सकता है। जस्ट 10 मिनट यूज़ करने के बाद पेन चला जाएगा। ये डिवाइस से एक पल्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल पल्स। जब पेन हो रहा है तो पेन सिग्नल तो ब्रेन तक जाता है, उसलिए पेन मालूम होता है। ये डिवाइस दूसरा एक पल्स जनरेट करता है, वो इधर वायरकोमेंट के लगाने के बाद जो एग्जिस्टिंग पेन सिग्नल है उसको ब्लॉक कर देता है, तो इसलिए पेन सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, उसके लिए पेन नहीं मालूम। और एक बार यूज़ करने के बाद 3-4 घंटे से एकदम रीडिंग मिल जाएगा। अच्छा, पेन को नहीं महसूस होगा? नहीं, एक्चुअली पेन तो एक नॉर्मल नेचर, हाँ नॉर्मल है, लेकिन वो ब्रेन में जाता है तब पता लगता है। पता चलता है तो वो ब्लॉक कर देता है। हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, जो पल्सेस है, वो एग्जिस्टिंग पल्स को ब्लॉक कर देता है और तो ब्रेन तक नहीं जाने पाता कि पेन हो रहा है कि नहीं। और ये स्पेशली वी आर डिजाइनिंग फॉर दिस वर्किंग। लेकिन क्योर तो नहीं हुआ ना, ये तो टेम्परेरी रिलीफ मिला। तो कुछ नहीं है, ये मेंस्ट्रुअल पेन है जो नेचुरल है। अच्छा, हमको इसे क्योर नहीं करना चाहिए क्योंकि यही सबका सोर्स है। अच्छा, आपका बात का सोर्स तो मेंस्ट्रुएशन ही है। हाँ। मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ तो हाँ उसको तो बंद नहीं कर सकते। ठीक है, वर्किंग वुमेन एंड स्कूल कॉलेज गर्ल्स के लिए परफेक्ट है। 3-4 घंटे के बाद पेन डिसाइड। आपका क्या टेक्नोलॉजी है सर? क्या टेक्नोलॉजी है आपका? अच्छा, हाँ, It takes live as a sample, we analyze the DNA from the analyze the entire genome and find out the risk factors, including cardiovascular, mental health, gastro, including life cells. Next is personalized medicine. So life cells would be very important for us to maintain, and like you said, it has to be a very faster process. So theoretically it is possible. So we want to use it for life foundations. Probably in future you might have resources to work on. Not the number of cells, right? We're looking at the moment like a therapeutic product. It's like 30 repetitions of every exercise, whereas it's recommended to do 400 on a daily basis. So I'm the founder of the company Aquaculture. Then we have built a device that takes over these exercise repetitions from a build the product over 3 months also. Then they can decide the tools that they want. I think it will. So let's assume I'm physiotherapist. I have my patient Venkat. I can connect this medical device onto the patient Venkat and I can control it through an app over here. So for example, if I can program this device and then I can press play, with which if you see over here, it will do the exercises for me. Yes, exactly. So today physiotherapy is a one-to-one industry, right? One physiotherapist with one patient at a time. With our technology, we are making it a one-to-many. One physiotherapist. How many patients can be? One device, one patient, but now a physiotherapist can have 4-5 devices on 4-5 patients, and with our tablet can then control all 4-5 patients at the same time. Yes. So now the cost really depends on where you are selling it to. If it is a big hospital, then it will go in the number of lakhs. If it is a small rehab clinic, then they rent it on a daily basis or a weekly basis. So a small rehab clinic might have Saturdays and Sundays which are very busy. Many patients come on Saturdays and Sundays. Then they rent this device on Saturday, Sunday, use it and then they give it back. If it's a big hospital, then they can probably buy this device and they can use it. So that is how. So what are your what is your interest? Thank you. If you want to know more, you can scan this QR code and then you can go to the website. There's a digital. So our company name is called Save Mom Private Limited. So we build a product for pregnant moms to monitor both mom and baby for 1000 days. So our product has two components. One is like a wearable device where the mother can wear and it do continuous activity monitoring of the mother, and it remind them when to take medicine, all these reminders this can give. Another one is a medical device. This can be used periodically.
every day or like every alternative days. So in the single device, it can capture all the major vital parameters, which includes blood pressure, ECG, heart rate, saturation, all the parameters it can measure from this device. So the captured device through the application, it can be sent to the doctor for the consultation. So our algorithm can identify the high risk mother. So it tried to find any high risk pattern during the pregnancy period. If there is any high risk, it alert the mother and doctor, and those mother has follow-up checkups. Our main objective is to reduce complication at the time of delivery, and the product is designed such a way that the entire 1000 days of health data of both mom and the baby will be captured throughout. So we have deployed this for more than 4 state government, mostly on tribal mothers, and we provided In which state you have already? Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra Pradesh, all these tribal villages. Tribal area. Tribal area we deployed this product, and more than 36,000 mothers we provided. Yeah. So how are the results? Yes, sir. So with our technology, we drastically reduce the maternal death of the mother, and average baby weight is increased to 40% because of personalized nutrition. Okay, thank you. Thank you. स्पायरोमीटर टेस्ट पीटी टेस्ट के बारे में बताया था डीएफटी टेस्ट जो है वो करंटली जो कंज्यूम हो रहा है गोज विद दैट इंस्टीट्यूशनल मशीन जो एक कंप्लीट रूम वो ले लेता है इंस्टीट्यूशन के अंदर ट्रेनर उसके पीछे रहेगा देन व्हाट वी हैव यूज्ड एवरीथिंग इनटू दिस डिवाइस देन व्हाट द कॉस्ट इट इज कॉस्ट विल बी appropriately for the patient as well as for the doctor. The cost of that machine that was just 3 lakhs to 20 lakhs and it convert into the 8,000 for the patient. Just 8,000. जो क्योंकि इसमें हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है that all just cut down everything. Okay. Then what डॉक्टर्स के लिए भी हमारा डिवाइस है जहाँ पे अभी रुपीज़ पर टेस्ट के साथ जहाँ से वो टेस्ट कर सकता है जहाँ पे हमें हमारा इकोसिस्टम कंप्लीट आएगा पेशेंट फेसिंग एप्लीकेशन डॉक्टर फेसिंग एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन और क्लिनिकल दिस इज ऑल वी हैव राइट नाउ फॉर द स्क्रीनिंग फॉर द अस्थमा then a COPD patient and as well as for the post-COVID. First electrochemical DNA biosensor, which detect infection and antimicrobial in just 90 minutes. अभी तक हिंदुस्तान में जो इन्फेक्शन डिटेक्शन होता है उसमें 24 घंटे से 72 घंटे का टाइम हाँ बिल्कुल लगता है अब आपको उतना वेट करने का ज़रूरत नहीं है यू कैन गेट रिजल्ट इन जस्ट 90 minutes. Our technology is already patented from India. We received the patent. It is government of India, and USA and UAE patent is also being taken care. The clinical trial from AIIMS Delhi is also being done. So we are ready for launch. कल जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किए थे 75 products, 75 startups. We are among those top 75 startups who have been launched yesterday. Congratulations. Thank you. With in the presence of PM Modi. मेरा YouTube. We have developed this point of care diagnostic medical device, which can test your liver function, kidney function, heart function, and pancreatic function test, and can give you result within 5 to 10 minutes. So we have made this portable device. Actually, right now, whenever you are going pathology laboratory, there are fully auto analyzer and semi-auto analyzer, which are very big, bulky in size and very expensive. So the cost of those instruments are around 10 lakhs to 1 crore rupees, so which is very expensive. So we have miniaturized that fully and semi-auto analyzer into this much, and for that this is the entire setup. So this is analyzing device and which is connected to mobile application. So we have developed this mobile application. This so here you have to book your ID for test. So you need to give primary information like mobile number, your name, address, everything. Then move next. Here you will select your test like albumin, glucose, which test you want to perform. So once you select it, those tests will be segregated to particular profile test like kidney profile, heart profile, liver profile, and
and then this application only will give you instruction okay, now put reagent. So now I will take reagent in it, take reagent, then we will mix patient sample in it, mix it, again reinsert in this device and start this. Within a 5 to 10 minutes, we will get result. What is the cost of this machine? Cost of this machine is around 10,000 rupees. 10,000. Yeah. Very reasonable. So very reasonable. So they are around 10 lakhs to 1,000. Okay, 10 lakhs to 10,000. Okay, thank you. क्या करेगा डेंटिस्ट? क्या पॉसिबल होगा सर? मैं क्वालिफाई इम्प्लांट किया हुआ हाँ सर हाउ डायबिटिक तो बिल्कुल हो जाएगा सर. सो ये देखिए सर, ये इससे पहले वो प्रोसेस किए थे ऐसे मार्जिन का बनाया उसमें मैंने पानी चालू नहीं रखा ये भी ये तो सेम प्रोसीजर यूज़ कर रहा है. ठीक है, ऐसे करते 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 मार्जिन दूसरा क्रिएट ऐसे करके लेट्स से आई एम जस्ट हरिंग अप द प्रोसेस. तो ऐसा ही एक स्टड यहाँ क्रिएट करें, फिर उसके बाद आपका एक इम्प्रेशन लेगा डेंटल एल्जिनेट जो हमने ये भी स्क्रैच से बनाया. ठीक है, इसका पेस्ट बनाएगा और आपका इम्प्रेशन देगा. तो ये दोनों डायमेंशंस कैप्चर हो जाएंगे, इसका और इसका. उसके बाद में वो डेंटल लैब में देगा वो इम्प्रेशन, देन ही विल आस्क देम टू मेक अ ब्रिज. इन दोनों लेट्स से दिस टूथ इज नॉट देयर, दिस इज देयर एंड दिस इज देयर, तो ब्रिज बनेगा. इन दोनों को यहाँ पर एक कैप डलेगा, यहाँ पे एक कैप डलेगा और यहाँ पे एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा. दिस इज द प्रोसीजर इन विच योर ब्रिज वुड बी मेड. But yes, the most qualified person to do that will be a dentist. I'm just a manufacturer, I'm a chemical engineer. Sir, our product name is Viva. This is a smartphone-based cervical cancer detection device. So we are actually detecting the early cervical cancer changes in the women's cervix. So it's based on fluorescence spectroscopy technique. And this technique can able to detect the early cancer changes in the women. And right now it is in validation stage. We are collecting testing on different patients at AIMS National, GSPM Medical College, Kanpur, and also at RML Lucknow Hospital. So this is very portable device, compact, minimally invasive, and also it's portable enough to reach out anywhere in the India. What is the cost of this machine? This is around 2 lakh rupees. 1 lakh? 2 lakh. 2 lakhs. Yes. You can hold it like this. Yeah, it's very good. But why the price is still 2 lakhs? It should be. We are working on that to reduce that price. Yes, yes. So it's in development stage. Actually, the main thing is this internal optical assembly. So that is why this is too much, like that much cost. So we are working on this assembly also, so that to reduce the price. Okay. हाँ बताइए. So this is Newfini. It is a smartwatch for your brain basically. मैं बोलती हूँ सर. आप बस थोड़ा सा बता दो. This is Newfini, smartwatch for your brain. So जैसे आमिर खान ने बोला था ना 3 Idiots मूवी में, काश यहाँ का स्ट्रेस नापने की कोई मशीन होती, ये आपके ब्रेन का स्ट्रेस मॉनिटर करता है. जैसे हमारे हार्ट रेट होता है ना, जिसे उसको हम ECG बोलते हैं. ये ब्रेन वेव है, हम इसे EEG बोलते हैं. तो हम ये आपकी ब्रेन एक्टिविटी को एनालाइज करके उसे कन्वर्ट करते हैं. जैसे हमने हार्ट रेट को स्टेप्स में कन्वर्ट किया, हमने ब्रेन वेव को स्ट्रेस में कन्वर्ट किया. स्ट्रेस, फोकस, अटेंशन, कितनी देर ध्यान लगा सकते हैं, कितनी देर का और किस लेवल तक का ध्यान लगा सकते हैं, कितना हम इजीली रिलैक्स कर सकते हैं, हम क्या अपने मन को खुद से शांत कर सकते हैं या हमें बाहर निकलना पड़ेगा शांति के लिए. ये सारी चीज़ें डिवाइस बताते हैं. By this device and mobile app. तो क्या कॉस्ट है इसकी? 49,000. 49,000. तो इसमें क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड होगी? आपका मूड, पॉजिटिव, नेगेटिव या नॉर्मल, आपका फोकस लेवल कि कितना ज़्यादा ध्यान लगा के आपने अचीव किया, आपके डिस्ट्रैक्शन कितनी जल्दी आपका दिमाग भटकता है, आपका रिलैक्सेशन लेवल
कि आप कितने इजीली रिलैक्स हो सकते हो। जैसे ना होता है मुझे एकदम से मैं रिलैक्स हो जाती हूँ और कितने टाइम लगता है रिलैक्स करने में, और एक होता है मैं कितनी जल्दी स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ। आपने हल्का सा कुछ बोला मैं तो परेशान हो गई, और आप कुछ भी बोलते रहो मैं तो अपने मस्त हूँ। ये सारी टाइप की चीज़ें पता चलती है। वो इससे पता चलने का फायदा क्या है? फ़ायदा क्या होगा? अब आप बताओ, आपके स्टेप्स जान के कैसे फ़ायदा होगा? हमको पता चलता है, फिर हम बोलते हैं हाँ तो मैंने 7000 ही स्टेप करे, अब तो मुझे 8000। लेकिन कॉस्ट तो नहीं पता चलेगा ना, रूट कॉस्ट तो नहीं पता लगेगा। कॉज आप अगर आप 1 महीना करोगे तो आपको कॉज पता चल जाएगा। जैसे हम स्टेप करते हैं, हम एक्टिविटी करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी एक्टिविटी से हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हाँ। तो इससे भी हमें ये पता चल जाएगा कि अब देखो चाय पी रहे हैं रोज़, मैंने चाय छोड़ी, उसके बाद मेरे लगा यार मेरी टेंशन तो ज़्यादा बेटर हो रही है, मैं तो जल्दी शांत हो जा रही हूँ, मुझे बेचैनी होनी हो रही है। फिर उससे हमें पता चलेगा कि अच्छा चाय पीना तो डेमो करके कोई दिखाएंगे क्या? पी के डेमो वो डेमो दिखाएंगे। मेरा फ़ोन चाहिए, अपने से कर लेगा। कनेक्ट वेलनेस प्रोसेस। एक सेकंड से बटन दो। दबा दो। ओके, सो अभी आपका ना ब्रेन में बन रहा है, तो आपको एकदम शांत बैठना है बिना सर तो बोलना भी नहीं आपको, ठीक है? ब्रेन मैप का मतलब ये हुआ कि अभी आप किस स्टेट में हो। फिर मैं 15 मिनट एक एक्सरसाइज कराऊंगी ब्रेन की, और उसमें फिर पता चलेगा उस 15 मिनट में आपके ब्रेन के साथ क्या हुआ। तो अभी ये बेस चेक कर रहे हैं। ओवर टाइम आप जब ये यूज़ करते हैं तो आपका फोकस लेवल धीरे धीरे बिल्ड होता है, एंड देन जब आप 10-15 टाइम्स ऐसे करते हैं, सो वी गिव अ पर्सनलाइज्ड कस्टम मेड रिकमेंडेशन फॉर योर ब्रेन, कौन सी मेडिटेशन जैसे आपको लगता होगा ना कि आपकी लाइफ में हम लोग इस एज पे भी आके कितने रिलैक्स रहते हैं, पर आजकल के बच्चे जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वो जो डिटर्मिनेशन और ध्यान लगाने वाली चीज़ है उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे को छोटी छोटी चीज़ें से ट्रिगर कर देती है। उस चीज़ को हम आप जैसा कैसे करें? आँख बंद कर लो, शांत रहना, पेशेंस ये कितना टाइम लगता है इसमें पता लगाने के लिए? सर सिर्फ अभी बताएगा, आपका कल का कुछ अलग होगा, शाम का कुछ अलग होगा। हम कह रहे हैं आपको एक स्टेट हर रोज़ मेंटेन कर सकते हैं। आप जैसे कोई जिम का इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, रोज़ यूज़ करते हैं, तब आपकी मसल्स बिल्ड होते हैं, स्टैमिना बिल्ड होता है। वैसे ही आप ये रोज़ 10 मिनट यूज़ करेंगे तो आपकी ब्रेन के लिए जैसे वॉक एक दिन नहीं कर सकते ना, वॉक तो रोज़ करनी होती है, तो दिमाग को भी रोज़ ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन बिना मशीन के भी पता लग जाता है कि हम टेंस नहीं है। नहीं पता चलता, हमें को लगता है हम टेंस्ड है, और कभी कभी हम नहीं होते, और कभी हम होते हैं और हम अपने कभी हम टेंशन से टेंशन हो जाते हैं, हाँ। स्ट्रेस पे स्ट्रेस हो जाते हैं, ये चीज़ें हुई है। अब कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उससे स्ट्रेस हो जाता है, उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते। कहीं स्लीप साइकिल सही नहीं होती तो काम लेवल्स बहुत डाउन आते हैं। हाँ, तो ऐसी कई सारी चीज़ें अभी हमें लगता है कि हम फोकस्ड बहुत है, बट हम फोकस्ड होते नहीं, कुछ और ही सोच रहे हैं। जब हम नॉर्मल होते हैं तो फोकस, जब या तो बीमार हो तो फोकस नहीं होंगे। फोकस डेली लाइफ में भी तो होता है ना, कि आप कोई काम कर रहे हो, उस काम पे कितना फोकस कर रहे हो। योर ब्रेन एनीथिंग इन योर ब्रेन, आपकी कॉग्निशन से रिलेटेड हर चीज़ मेजर होती है। ये फोकस स्ट्रेस आप देखिए, वहाँ देखिए ग्राफ में तो आपको थोड़ा समझ आएगा। क्या ग्राफ शो कर रहा है? इनका ग्राफ ऐसा है कि इन्होंने ना पहले स्टार्ट किया, हल्का सा फोकस हुए, फिर वापस उधर ही आ गए जिस स्टेट पे स्टार्ट किया था। फिर फोकस हुए, फिर बीच में ना 1 मिनट 30 सेकंड के अराउंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए। बीच में किसी मोमेंट पे आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप स्क्रीन पे ध्यान नहीं देते, उसके बाद फिर आप फोकस पे आएंगे, ठीक है? 1-30 सेकंड के बाद आप सबसे पहले भी आप फोकस से डिस्ट्रैक्शन का है,
जो हमारी नेक्स्ट वीक में आपकी लॉन्च भी आप आ रही है मशीन का, उसमें आपको स्ट्रेस का भी ग्राफ ऐसे है, तो आप कितने स्ट्रेस हो वो भी उसमें पता चलेगा, स्ट्रेस काम। आपकी बच्चे आपको ऐसा लग रहा है कि आप में पेशेंस ज़्यादा है पर बच्चे ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाते हैं? आपको नहीं, यहाँ पे मेरा किसी का ये मतलब है कि आप कोई छोटी सी बात के बच्चे जो है वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उनकी लाइफ में, किसी ने कुछ बोला, ऑफिस में कुछ नहीं हुआ, सेंसिटिविटी ज़्यादा है। अब इसके जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी, है ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में परेशान हो जाते हैं, फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। हम लोग आपके टाइम पे कितना बेटर था, हम लोग एक दूसरे से कंपैरिजन कम था, आज के यूएस में बैठे बच्चे से कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ ये चल रहा है, हमसे स्ट्रेस कितना इंड्यूस होता है, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं 13-14 साल के, पता भी नहीं चलता, अच्छा खासा लोग रात को मज़े कर रहे हैं, फैमिली के साथ होते हैं, पार्टी करते हैं, अच्छी आपके So, in terms of the statistics, breast cancer is the biggest. थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ। So, breast cancer is the biggest women killer in India. The incidence rates are about 7 lakh women die of India every year. What is the percentage? Percentage? So, in terms of incident rates, there are 7 lakh women that die of breast cancer in India. And the existing modality is to screen women using something called as mammography, which is a great tool, which is a specific way of doing, essentially, a specific way of configuring the X-rays. But then the unfortunate state of mammography is that it doesn't work well with women of age under 45 years of age, and also it is not great in terms of the privacy that needs to be provided to the women, and it also has a lot of radiation exposure. So what we have done at Biotechnology is to solve this problem by building this technology. Essentially, is a combination of thermal imaging, wherein we use thermal cameras to detect, essentially to click 5 different pictures of a woman of the breast region, and then use a lot of AI algorithms which are capable of identifying cancers at a very early age. So the thing with breast cancer is that the faster you identify that there is breast cancer, it is easier for the women to go through the next set of medical procedures. Typically, mammography might be able to identify larger cancers until they get to the multiple cancers. But thermolytics is something that is capable of identifying cancer, even if it is as small as 4 millimeters in size. And as the woman enters, we are able to create a report for her in the next 10 minutes of the scanning. And it's a completely privacy-aware, no pain, and no touch kind of a solution. We are associated with more than 120 different hospitals across India, not with 36 different ratings, 10 of them from the US and the rest of them from Japan, Singapore, and Canada. And we recently got cleared with the FDA clearance to be for the fight of removing breast cancer on the face of the body. And the technology thermolytics enables us to do that. What is the cost of this machine and this software? So it's actually quite affordable both for the women who is doing it and also for the hospitals. For hospitals, it costs 1/100th of what a typical mammography machine would cost, and that's actually a affordable solution. For the women, on the other hand, it only costs about 1/3 of a typical mammography scan. And you can also either go to a hospital or a clinic. You can also avail it for the convenience of your home. You can just visit and then get the screening appointment from the Thank you. नाम बताइए अपना। अच्छा, ओके, प्रोडक्ट के बारे में। हाँ हाँ बताइए। ओके ओके, सो ये एक लोकाप वेंटिलेटर है, लोकाप 310 प्लस ICU वेंटिलेटर है जो हॉस्पिटल से यूज़ होता है। वेंटिलेटर है,
ये क्या कॉस्ट है इसकी? इसकी कॉस्ट है 3.9 से लेकर 4.5 के रेंज में चलता है। अच्छा। 4.5 लाख के इसमें 8 आवर ऑफ बैटरी बैकअप है। इसमें 8 आवर्स अगर पावर सपोर्ट नहीं होगी, पावर सप्लाई नहीं होगी तो ये पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहेगा। सर इट्स अ काइंड ऑफ वैक्सीन कैरियर हाँ जो कि टेम्परेचर मेंटेन रखता है बिटवीन 2 to 8 डिग्रीज। ऑल सॉर्ट ऑफ वैक्सीन इज नेसेसरी शुड बी अ टेम्परेचर मैंडेट बिटवीन 2 to 8 डिग्रीज। नॉट ओनली द वैक्सीन, ऑल्सो द लैब कल्चर्स, स्पेसिमेन, ब्लड सैंपल्स। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक कैसे चलता है? It has the battery backup of 12 to 15 hours. Chargeable batteries है इसकी। अच्छा, क्या कॉस्ट है इसकी? कॉस्ट क्या है? We have different variants. इसका कॉस्ट कितना है? 1,30,000. कॉस्ट ज़्यादा है ना, कॉस्ट रीजनेबल होता Sir, it depends upon the application and the variants. है। जैसे वैक्सीन के लिए, कॉमन वैक्सीन के लिए जो यूज़ होता है, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वैक्सीनेशन करने जाते हैं, वो कॉमन यूज़ होता है, बहुत सारी क्वांटिटी में लगता है। सर उसमें आप टेम्परेचर मैंडेट नहीं कर सकते। आपका वैक्सीन किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप डेटा उसका नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। या ये जो है ये GPS GSM कंट्रोल के साथ आता है। जहाँ भी आपके जो NMs जाते हैं वैक्सीन लेके, सो वी कैन कंट्रोल द टेम्परेचर एज वेल, वी कैन कंट्रोल दिस उनका जो भी लोकेशन रहेगा दैट इज। अच्छा, कितना टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है वो कंट्रोल कर, उसका पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड्स रहता है। क्योंकि प्रॉब्लम वही होती है ना, जैसे वैक्सीनेशन करने जाते हैं, अब वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते तो वो पता नहीं लगता ना कि वो टेम्परेचर मेंटेन हुआ नहीं हुआ। उसके बाद वैक्सीनेशन हुआ, वो फेलियर हो जाता है वैक्सीनेशन। और उसका कोई भी आप रिकॉर्ड हाँ। नहीं रख सकते। प्लस दैट इज अ ट्रेडिशनल, दे डोंट हैव हाँ। टेक्नोलॉजी। उनको अवेयरनेस भी नहीं है इतना कि कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नहीं होता है, उससे ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। वेस्ट हो जाता है ना, फेल्योर, बेस से ज़्यादा वैक्सीन फेल्योर हो जाता है, वो सारा स्ट्रेटेजी फेल्योर हो जाता है। जनरल पब्लिक लाइक अस, हमें तो लगेगा कि हमें वैक्सीन लग गई है। हाँ। आई डोंट नो द पोटेंसी ऑफ द वैक्सीन कि हाँ वेदर इट इज जो गया है हमारे अंदर वो इतना इफेक्टिव है कि नहीं। और यही केस एनिमल्स में भी होता है, जो ह्यूमन में भी है, एनिमल्स में पूरा डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम फेल हो जाता है। अब उस एरिया में, विलेज में, मान लो विलेज में, एक विलेज में वैक्सीनेशन ठीक से नहीं हुआ तो उसके पूरे विलेज में फेलियर हो जाएगा। FMD का वैक्सीन होता है, ब्रूसेलोसिस का होता है, बहुत सारी डिजीज का होता है। आपने कहा कि ये मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है, तो बट हम लोग जो बना रहे हैं ये जो भी मिनिस्ट्रीज में जितने भी कंप्लायंस चाहिए होते हैं कि WHO PQS चाहिए। अच्छा, उसके हिसाब से उसके हिसाब से तो ऑल द सर्टिफिकेशन आर कम अप विद द कॉस्टिंग्स। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ बताइए। डिवाइस के बारे में बताएं। हाँ, कंपनी के बारे में भी। कंपनी के बारे में बताइए। हेलो एवरीवन, हिंदी में ही है ना या इंग्लिश में? जो आप कंफर्टेबल। हेलो एवरीवन, आई एम सब्राइट फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी प्राइवेट। और core innovation is in microscopic field. So we make digital microscopes. We enable telepathology for diagnosis. So right now the available solution for digitization has some native problems that we have resolved. Right now we have complete field observation. वेरी गुड। जो आई से आँख से देखते थे उसके देखने की ज़रूरत नहीं, इसके पे आप देख सकते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ कर सकते हैं। हाँ। साथ में डॉक्टर कहीं भी हैं आपके, यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट विद दिस एंड दे विल बी एबल टू डू द डायग्नोसिस। What is the cost of this machine? This my first one. Machine starts from 1 lakh, goes up to 3-4 lakh depending upon the lenses and tablet which we provide. Yeah. We also have portable version. It's very unique. You can carry weighs less than 3 kilogram and you अच्छा, can carry
लैब में भी यूज़ कर सकते हैं. इट कैन बी यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैब एंड अदर लैब्स. Our main focus is diagnostic lab only. हाँ. टीचिंग भी हमारा second हाँ, focus टीचिंग में भी यूज़ कर इसमें सकते क्या हैं. होता है जैसे इसको बड़े स्क्रीन के साथ अटैच कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ देख हाँ, सकते हैं। यही मैं वही कहने वाला था. तो ये सारे advantages। पहले एक जन जाके उसमें से देखते थे, आई पीस में से हम लोग जब जाते थे कॉलेज में. उसके बाद और अच्छी बात ये है कि अब हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से बना रहे हैं, तो जैसे पैथोलॉजिस्ट को कोई चीज़ डायग्नोसिस में वो हेल्प करेगा, ये सारे चीज़ें हम और दूसरी बात इसका प्रिंट भी ले सकते हैं आप इसका. एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग एक नई चीज़ है जो लोग अब तक माइक्रोस्कोप में क्या होता है तो देखते थे, रिपोर्ट लिख देते थे. हाँ. अब किस बेसिस पे आपने रिपोर्ट लिखा उसका एक इमेज भी लगा सकते हो आप. हाँ, उसका एविडेंस जरूरी है ना. आप एक्सरे के लिए देते हो, हाँ. सीटी स्कैन एमआरआई के लिए आप इमेज प्रोवाइड करते हैं, वैसे माइक्रोस्कोपी के लिए कर सकते हैं. तो एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग है. तो कंपनी का नाम एक्सपो सॉल्यूशंस. अच्छा. क्या आप बना रहे हैं प्रोडक्ट? हम कोल्ड चेन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. अच्छा. जिसमें हम पीसीएम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, फेस चेंज मटीरियल. अच्छा. तो इसको आपको 4 से 5 घंटे चार्ज करना होता है. उसके बाद ये आपको 12 से 15 घंटे का बैकअप देता है. और फिर आपका फर्स्ट टेम्परेचर डिस्प्ले अच्छा. जो पहले है जिसमें टेम्परेचर डिस्प्ले देते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि इसमें टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और वी हैव ऑल्सो रिप्लेसमेंट फॉर ड्राई आइस. जो ड्राई आइस यूज़ होती है उसमें -20 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए. बैग को खोल के दिखाइए कैसा. तो इसमें क्या थर्मोकोल है कुछ और? नहीं, इसके अंदर में हम इंसुलेशन पफ इंसुलेशन यूज़ करते हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है सेट पूरा का पूरा. तो कितने आवर्स इसमें टेम्परेचर मेंटेन है? 10 से 12 घंटे टेम्परेचर मेंटेन होता है नॉर्मली एक बार फ्रीज करने के बाद पूरे दिन का. लेकिन ज़्यादा चाहिए ना, जैसे वैक्सीन ट्रांसपोर्ट होती है. हम 24 घंटे 48 घंटे और 72 घंटे मतलब 120 घंटे तक का मैन्युफैक्चर करके देते हैं एज पर द कस्टमाइजेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट रिक्वायरमेंट. वही मेरे कहने का मतलब है ना जी, क्योंकि जब वैक्सीन ट्रांसपोर्ट करना होती है तो रिक्वायरमेंट इतना उसके अंदर वो वाला दिखाइए. क्योंकि हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकल. बिल्कुल. क्या कॉस्ट है बैग की अभी? ये 5000 रुपीज़ का होता है, ये 6500 का होता है. ये 7 लीटर है, ये 15 लीटर है. अच्छा 15 लीटर. हाँ जी. और एज पर कस्टमाइजेशन हम इससे इंसुलेशन इसका बहुत अच्छा है. बिल्कुल इंसुलेशन ही इसमें सारी चीज़ों को देता है. प्लस पीसीएम जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ये सबसे ज़्यादा पेटेंटेड है. ये हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो किसी तो ये लिक्विड कहाँ यूज़ कर रहे हैं? रखना पड़ता है इसको चार्ज करके? इसको 5 से 6 घंटा फ्रीज में जैसे हम नॉर्मल जेल पैक्स करते हैं. अच्छा जेल पैक की जगह इसको यूज़ करना. हाँ, जेल पैक और इसमें डिफरेंट है बहुत ज़्यादा. ये पीसीएम है, नॉट अ जेल पैक. पीसीएम इज फेस चेंज मटेरियल. अच्छा फेस चेंज मटेरियल जो इसको ज़्यादा आपको बैकअप. ये क्या कॉस्ट है इस मटेरियल की? ये तो सर हम इसके साथ नहीं देते हैं, इसको अकेले को नहीं देते हैं. हाँ नहीं मैं पूछ रहा हूँ. हाँ लेकिन जस्ट कॉस्ट पूछ रहे, बाई चांस किसी का खराब हो जाए या वो जाए. 700 to 800 रुपीज़ में एक कॉस्ट आती है. हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं समझ गया. वो तो किट है आप दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं. वेरी गुड. नहीं होता है क्योंकि इसमें हमने ड्रॉप टेस्ट किया 20 ड्रॉप. अच्छा इसकी शेल्फ लाइफ कुछ नहीं है. 3000 साइकिल है. अच्छा 3000 साइकिल. वेरी नाइस. आपका हाँ क्या है? So this is contactless patient registration device. अच्छा. Actually sir, this is the startup Life Private Limited. अच्छा. This is faculty startup from IIT.
अच्छा and incubated there. And sir, this is contactless patient registration device for medical purpose, like at hospital, at OPD, there are long queues, and to reduce that, this device we can use. This will register in 1.5 minutes for single registration. And as a patient will come in front of the device, this will detect patient and will start communicate with the patient, and will ask question like name, mobile number, address, and will take body parameters like temperature, it will take. And then that data will store. कौन-कौन से पैरामीटर ये कर सकता है? Like for now it is temperature, but yeah, we are working on like oxygen and and that after registration that data will store on the server of the hospital, and from there that doctor can access the data and can use it. So like that, and this device can have many other application, like we have this mobile platform here, so it can yes, and we can extend this application to the home environment also, like for elderly people and like that. So this is the startup. अगर शेप के लिए आपने ट्राइपॉड यूज़ किया है, अगर कोई तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव, थोड़ा सा मॉडल यूज़ करे, थोड़ा सा इनोवेटिव, हाँ, क्योंकि कैमरे का ट्राइपॉड टाइप का आपने यूज़ किया है, लेकिन फिर भी अच्छा प्रोडक्ट में। हाँ बताइए। Sir, we have invented vein finder, augmented reality-based vein finder. Basically, 80% of patients who are getting admitted to any hospitals requires vein finding. In emergency and critical situations, identifying the vein is a very critical task. Elderly, obese, oncology, neonatal patients are finding it very difficult to find their vein. So we have found a solution to get the veins on time. It's a very complicated technology, and we took the patent also. We are a Make in India company, and we are a sponsored company. We are a Kerala startup incubated company. We are from Kerala. What is the cost of this machine? The product cost is 3.5 lakhs. 3.5. Yes. Very costly. The US competitors are actually priced at 7 lakhs, and India is buying it now. अच्छा, India is buying it. Thank you. Project. So we can by this our device we can enhance up to fruit and vegetable shelf life up to 15 to 20 days, which is very good for the for export and other for export etc., and for farmer producer etc., retail shopkeepers, everyone. Even we can use in house our houses too. लॉस तो करीब 3 मिलियन जो है हमारा एवरी ईयर लॉस होता है, एक्सपोर्ट रिजेक्ट हो जाता है किसी कारण है, और बहुत सारा फार्मर को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, वो प्रोडक्ट नहीं कर पाते, उन पे सारा लोड जो है ओवरऑल फिर कस्टमर पे लोड आता है उस लॉस का, तो प्राइस हाई हो जाता है, उसी वजह से। तो इससे बहुत ज़्यादा, और 50 to 54% जो बनाना भी रख सकते हैं। हाँ, बनाना भी रख सकते हैं, मतलब सभी कई मल्टीपल है इसमें जो है। इवन कस्टर्ड एप्पल वी कैन यूज़। अच्छा, कस्टर्ड की तो शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है उसकी, तो कस्टर्ड एप्पल पे भी ये बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, अच्छी चीज़ बनाई आपने। तो क्या कॉस्ट है इसके डिवाइस की? सर कॉस्ट इसकी जो है, ये स्मॉल डिवाइसेस तो 4,000 है, फॉर वी विल ट्राइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट बिकॉज कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, क्योंकि अभी ये पायलट स्केल पे है, अभी लार्ज स्केल पे जाएगा तब ये और कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। कंपनी का नाम क्या है आपका? प्रोबीटेक सर, प्रोबीटेक दिस वन। कॉस्ट रिड्यूस हो गया, पब्लिक के लिए यूजफुल हो गया। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा कमी रखा है 1500 के अप्रॉक्स में, और भी हम कॉस्ट रिड्यूस, एक्चुअली ये पायलट स्केल पे है, तो जैसे लार्ज स्केल, हाँ अभी सेल्फ लाइफ डिवाइस है। इसमें क्या हम लोगों ने एक फार्मूला डिज़ाइन किया है, उसके आदेश पे क्या एथिलीन को इसके बंद कर दें, तो इससे क्या सेल्फ लाइफ इनहांस होती है, और कुछ बनी टेक्नोलॉजी जैसे टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए भी इसमें किया हुआ डिवाइस में। उसका फार्मूला तो सीक्रेट है कि वो इसके बंद रिड्यूस इनिबिट करता है उसके प्रोडक्ट से। The technologies we are giving a insect pest management tool using a pheromonal approach. The pink bollworm in cotton is known as the corona of cotton. It causing almost 60 to 70% economic cotton damage.
the technology disrupts the mating behavior of the insects. It will not allow the male population to identify its female counterpart, thereby reducing the mating frequency and their population. Preventing or just reducing? This technology is controlling the male population not to find its female partner. Thereby their mating behavior is destroyed. And controlling... Because trap comes works on the principle of the attract the male. Exactly right. Yeah. But thing is, here, the moment you put the trap, the number of moths which are present in the trap will indicate the population density which is being developed in our crop. But this will definitely does not allow the male to find its partner. It confuses the male. And then the male which has come to the paste and they hover around, when they land and go back, small particles will adhere to that. That male is looking a pseudo female to the another male. Now male will trail and another male. So creating complete confusion zone, which the male will never able to find the female partner for mating, and then their population will go down. What is the accuracy percentage? The mating disruption we call it as. Mating disruption is 95%. 95%. Now it's a time for an insect that we have to teach a lesson that they should also undergo a family planning strategy for them. So we are teaching with this solution a family planning strategy which will not translate them into an ETL. ETL is an economic threshold level. Our crop is protected without causing much damage to the insect population also. It is the breeding cycle is under control with full extent of the crop productivity. Okay, thank you. So basically, I tried to speak with my first I tried to make it and then converted it into speech and then I tried to press it manually and then converted it. So basically this is using the voice pattern. So we are capturing this using electromagnetic. Basically it collects the data of multiple movements in the frequencies. And then we are getting the pattern. And then we are Hi, so this is a female hygiene brand wherein which we have bifurcated into two categories. One being the organic, the other one being the sustainable. When I say organic, then we have all the traditional products, that is pads, tampons, liners, and then we have products for teenagers and products for adults. And when I say sustainable, then we have a cup and a disc, and also we have a drip. So cup, we all know what cup is. That comes in a different shape. Lemmy has brought the cup in a different shape. Disc, like Lemmy is the first brand in India to launch disc. This helps in period intimacy, and then we have drip, which is a period underwear. You don't have to use any of these products while you are on a periods, and it soaks up to 120 ml of the fluid. So this is the sustainable range, and this is the organic range what we have. The voice of the brand is a little chic and sassy and bold, in which we want to say that let's just normalize periods. Period को इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है. Let's be very okay with it. Don't have to really wrap in a black cover or a newspaper, and you can just enjoy your periods. We can give you a comfortable period because periods can never be good. They can always be comfortable. So, okay, thank you. Basically, ये हमारी organic range है. This. Sir, our product is Aquaculture. Sir, one minute. Our product is Aquaculture. We especially for built for special education. थोड़ा जोर से. Sir, yeah. My name is Satyanarayan. I'm CEO and co-founder of Biotech Infotech. We basically work in the area of special education, learning disability, and development delays as well. So we create a product. It's called Aquaculture, especially for kids to train cognitive function delays and also social interaction and development delays also identified. So just typically, we go to the classrooms. Teachers have been difficult to train the kids as well.
and we provide proper training using the virtual reality tools. So these are the virtual reality tools we provide, and the kids can actually use the entire environments, and also they can able to understand training scenarios and phobias, height phobia, and also they can cognitive issues can be identified, and we're using biosensors to understand the various aspects of their delays, development delays, learning delays as well. And we have eye tracking sensors to know about the attention span. So this is a important data to build much more better effective therapy by the therapists as well. So we move forward, we implement different schools, 25 different centers we already implement in south part of India. So looking to expand across India as well. Thank you. Monitoring technology that we have developed, we call it SHOOT. It's first of a kind made in India technology validated by ISRO for its accuracy. So this kind of technology is being used on Moon and Mars to detect the presence of ions and water. We are taking out this technology to the farmers to help them understand irrigation requirements over their farms, what kind of nutrient management is needed on the farm, and then pesticide or spraying requirements of the farm. With this, a farmer is able to save close to 50% on water, 25 to 30% on the chemical sprays on nutrients that he is adding, and 25 to 30% increment in farmer income is seen. This kind of technology is first of all handheld, portable, very light, very easily usable on a field. So on a 1 or 2 acre of farm, a farmer needs to put it at 2-3 locations, and he gets a whole map of that area, which is able, with simple visuals, a farmer is able to analyze what actions I need to take, where do I need to put the water, much more nutrients, much more sprays, and save where. What is the cost of this device? 15,000 rupees, 15,000 rupees, and we are working with state departments to actually provide 80% subsidy to the farmers, and in the given times we would be able to sell it to around 3,000 rupees once we have 80% subsidy on the farm. Thank you. So what is your channel's name? Agri Museum. Name is clonable. You understand, sir? Now government, what they do, they are very smart. Now what they have done, they have taken unclonable IDs. Correct? This unclonable ID cannot be copied. In the same manner, we have developed a solution which we print, and it gives a structure. This structure will be unclonable. Nobody can copy it. And we print it. And we print it, or we give it a name. Like you have a name, I have a name. I give it a name in the form of QR code. Because QR code is machine readable language. I speak in English, you speak in English, you understand because we have went to the same schooling, correct? That is why you are. But if you are going to read these numbers by mobile, then it won't be able to read it, correct? आप देखते होंगे कोई वेबसाइट में देखते होंगे उसमें कैप्चर डालने के लिए आता होगा, वो इसलिए कैप्चर होता है कि मशीन नरेट करता है, दे आर ह्यूमन आर नॉट, करेक्ट? सो टू बी read by machine very precisely, we need to print in their machine language. So this QR code is machine language. So we have an app available. We intertwine this 3D structure and QR code, and then we intertwine it, and then put it, and then we can authenticate the product. We have permanent installation also that works well enough for everybody. We custom operation, and then we have. थोड़ा जोर से थोड़ा जोर से क्योंकि डिस्टर्बेंस है। हाँ हाँ बोलिए। Chemical processes, they make the leads to chemical processes. Louder. So that makes chemical processes or active ingredients using chemical processes. And these chemical processes are hazardous. They pollute air, water, and they use very expensive catalysts, and they're not very specific. So we make it through enzymatic processes, and they're very natural, green, and cost effective. You take these enzymes from microorganisms, and you are trying to produce it in a bioreactor. And the only challenge there is the enzyme will not listen to what you say. So we use a technology which can engineer the enzymes and optimize the enzymes to work at that conditions. And we are now able to recently presented India for making an enzyme called as fluorinase, which incorporates fluorines in drug molecules. So only 2 companies were chosen in Asia, one of it is Diagnostics. And our future is making India the hub for specialty enzymes. This whole business is monopolized by
Western and Chinese market. So we want to break this barrier and make India the hub for specialty enzymes, make it cleaner. It's a parallel process, parallel initiative. What are the applications of your enzymes? Applications: pharmaceutical, nutraceutical, agrochemicals, and also fragrance, flavors, cosmetics. We produce it through We work on different industries like pharmaceutical, nutraceuticals, agrochemicals, fragrance, flavors, cosmetics, entertaining industries, detergent industries, and any place where you work on different kinds of chemicals. So our goal is to convert a chemical reaction into an enzymatic based reaction. So chemical processes are hazardous, so enzymatic process is natural. So the effluent treatment is very simple in the enzymatic process, and the products that you're going to get with the enzymatic process is very specific. And that's the outcome of the enzymes. And we have 7 different classes of enzymes designed for different industries, and we are coming up with many enzymes of these kinds. We also work at waste management and fuel, electricity, improving battery life. We are getting into energy level also because the magic is in the enzyme. The most difficult task is engineering the enzyme. We are able to do that using our technology in a very faster manner and in a manner where very few lab experiments are to be done. Not expensive process. Most of the pharma companies, agrochemical companies shy away from this natural process or enzymes because they think it's a very exhaustive process, expensive process. But we are able to do very few lab experiments, which way this way we are able to attract them and convert all their chemical processes to enzymatic So ये सपोर्ट करता है जो लोग जो काम करते हैं वो लोग करते हैं। तो ये सहारा देता है आपकी कमर और स्पाइन को। इन लोगों को भी कमर और बैक की प्रॉब्लम है, इन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये कमर पे पड़ने वाला स्ट्रेस आधा कर देता है और उनकी कार्य क्षमता प्रोडक्टिविटी को दुगना कर देता है। क्या कॉस्ट है इसकी? ये कॉस्ट वेरी कर रही है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिफरेंट, बट ये दुनिया का सबसे कॉस्ट कॉम्पिटेंट एक्सेस है। कितने का है ये आप जो पहने हुए हैं? सो इट्स 18,000 11 to 18,000 के बीच हम प्राइसिंग करते हैं एज पर द कस्टमर सेक्टर। तो इसको इसको क्या फील होता है इसको पहनने के बाद? ये आपको फिजिकली सपोर्ट देता है। अच्छा, फिजिकल से झुक के तो आपको कमर पे लोड पड़ता है, या वो कमर पे लोड नहीं पड़ने देता। अच्छा, लोड नहीं पड़ने देता। हमारे प्यारे साहब सर। हाँ, तो ये है ना फिजिकली सपोर्ट देता है। हाँ, आपको 30 kg तक एक्चुअल सपोर्ट देता है। जब झुकते हो उठते हैं आपको फिजिकल सपोर्ट। प्योरली भारत में विकसित, भारत में बना प्रोडक्ट है। हमारे 11 पेटेंट ग्रांटेड है अलग अलग देशों में, इंक्लूडिंग अमेरिका, चाइना, रशिया, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऑल दीज कंट्रीज। तो अभी इंडिया में कितने लोग यूज़ कर रहे हैं इसको? तो अभी लाइक और मोर देन 400 डिफरेंट कस्टमर्स हैं। तो उनकी रिपोर्ट क्या है उनका? सो वी आर गेटिंग वेरी पॉजिटिव फीडबैक, मतलब बहुत ही अच्छा उनका इनपुट है और हमें नए नए एप्लीकेशन कस्टमर्स बताते हैं, इसके यूज़ बताते हैं। जो किसानों की 90% एक्टिविटी या काम ऐसा होता है जिसमें उसको झुक के काम करना है। हाँ, पड़ता ही है। फसल काटना है तो झुक के काटना पड़ेगा। चावल की खेती हो गई या हाँ, फसल काटना हो गया या कुछ उठाना हो गया, तो कमर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। और ये बहुत सारे किसानों की कमर और बैक पेन की समस्या रहती है। हाँ। तो ये जयपुर बेल्ट क्या करता है, उसको कमर पर पड़ने वाला जो जोर है, लोड है, वो कम कर देता है और उनकी कार्य क्षमता को डबल कर देता है। मतलब किसान को बिना रुके, बिना आराम किए वो बहुत ज़्यादा काम कर पाता है। ये थकान नहीं होने देता, आपको एकदम खड़े रखता है, सपोर्ट करता है। तो किसान लोग कितने यूज़ कर रहे हैं अभी आपकी? सो किसान लोग हमारे मल्टीपल है कस्टमर्स। हाँ। आई नीड टू चेक, बट
world first.